Namaskaram and hello to everyone. My name is Radha Shalini and I practice art therapy since many years. Now I have to come up with a new form of art which is a combination of art therapy, mindfulness and new art skills, which I call it as mindful expressive art. So today I'm going to talk about a little bit about mindful expressive art and art therapy. So art therapy or the mindful expressive art can be practiced by the individuals, by the groups, by the communities together, and it can be done in the offices or in the schools, anywhere. So what is mindful expressive art and what is art therapy? थोड़ा इसके बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं. अब आर्ट थेरेपी में हम क्या करते हैं, हम एक थेरेपेटिक प्रोसेस है टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स और to do it for your holistic well-being, I would say mental, physical well-being through a creative technique. We use the expression through your creativity. For this, it is not mandatory that you need to know any art form. ज़रूरी नहीं है आपको कोई आर्ट आती हो तभी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज इसमें हम जो उसका प्रोसेस होता है उसको इम्पोर्टेंस देते हैं. उसको आप कैसे भी, सब लोगों को लाइन बनानी आती है, फॉर्म बनाना आता है, कुछ शेप्स आती हैं, तो सीधा हम उन्हीं को यूज करके वी ट्राई टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ. इन माइंडफुल एक्सप्रेसिव आर्ट व्हाट वी हैव अमैल्गमेटेड, उसके अंदर हमने कंबाइन किया है एक सर्टेन कॉन्सेप्ट ऑफ माइंडफुलनेस जो आपकी अवेयरनेस को इंक्रीज करे. कुछ भी ऐसी चीज़ जो आर्ट आपको एक थेरेपी भी दे रही है, प्लस आपको एक माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट भी आपके अंदर इंस्टॉल कर रही है. अगर आपको कोई भी प्रश्न है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू आर्ट थेरेपी और द न्यू फॉर्म ऑफ माइंडफुल एक्सप्रेसिव आर्ट, यू कैन लीव अस अ कमेंट. वी विल बी हैप्पी टू आंसर यू. And do like and subscribe our channel because we'll be coming thrice a week on YouTube with the new questions, queries, how you can use it in the practical ways. So that you can subscribe us so that you get all the notifications. Now, how does the art therapy work? In art therapy, we have three things. One is the artist or the art maker. Second is the art therapist. And third is the art. जो इन तीनों ट्रायंगल ये जो बन जाता है आर्ट थेरेपिस्ट और आर्ट मेकर के बीच में, उसमें एक फैसिलिटेशन होता है जिसमें एक अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस की नींव रखी जाती है. एक डेवलपमेंट होता है जिससे हम कोई भी जो इशू होता है, चाहे वो कंसंट्रेशन का हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट का हो, चाहे वो किसी फिजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, तो उसको हम वहाँ पर एक बेसिक फाउंडेशन बना देते हैं एंड वी कार्व आउट द पाथ जो आर्ट मेकर उस पर चलता है. सो द वर्क ऑफ द आर्ट थेरेपिस्ट इज टू फैसिलिटेट. वो कंडीशन को देख के, वो अपने सामने आर्ट मेकर को देख के, दे डिफाइन द काइंड ऑफ द मटेरियल्स टू बी यूज्ड, काइंड ऑफ द टेक्निक विच कैन बी इजीली यूज्ड टू carve out the path for the art maker to achieve the final transformational results. तो अभी इसमें मैं कैसे करना है, क्या करना है, वो आर्ट थेरेपिस्ट डिसाइड करते हैं. वो सारा मटेरियल भी आपको समझाते हैं, तरीका भी समझाते हैं, ताकि जो आप अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, उनके लिए वो अचीव हो सके. हाउ डज इट वर्क? आर्ट थेरेपी और या माइंडफुल एक्सप्रेसिव आर्ट काम कैसे करता है? ये इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट खासियत है कि इट्स अ साइलेंट वे विच हैव्स द मेजर इम्पैक्ट ऑन बॉडी, माइंड एंड सोल. अब बॉडी पे कैसे काम करता है? जब भी आप कोई आर्ट एक्टिविटी करते हैं, यू इन्वॉल्व ऑल योर 5 सेंसेस. सो द अवेयरनेस ऑफ द यूजिंग योर 5 सेंसेस इंक्रीजेस. जैसे मैंने पहले किया, आप कनेक्ट में रहिएगा. हम एक्सरसाइजेस करेंगे. कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आपकी कौन से सेंसेस को एनहांस करती हैं. द मोमेंट योर सेंसेस आर एनहांस्ड, you become aware of your surroundings, aware of your own being. The whole lot of development starts. Similarly, mind को ये करता है काम. It gives you lot of peace, it gives you lot of strength. It is a sort of an active meditation which brings you here and now. There are certain people who are not able to concentrate on the meditation just through the basic breathing process. But when they're actively involved in doing the art form or some other form of the, not only painting but other some form of the art also, they come to the moment
here and now very easily. So it really helps to bring your awareness to a very high level, and it increases your focus, it brings you to the present moment, it increases your intelligence, increases your creative ability, critical thinking, cognitive development, and many more. Now, soul, when it has been told to us, it has been expressed to us that our memory is majorly visual. बहुत ज़्यादा पार्ट ऑफ मेमोरी जो होती है हमारी विजुअल है। अब वो विजुअल मेमोरी जो होती है वो आपका सॉफ्टवेयर बना हुआ है और आपके ब्रेन में इंस्टॉल्ड है, विच इज़ लेटिंग यू, विच इज़ मेकिंग यू फंक्शन पार्ट ऑफ द सबकॉन्शियस, ऑल द मेमोरीज देयर एंड यू आर जस्ट वॉकिंग थ्रू दैट। आप उसके सहारे ही, उसके अनुसार आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो समवेयर व्हेन योर एक्सप्रेशन कम्स, those memory get released off, those certain blocks अपने आप ही release होते हैं। And if the art, you have a facilitation from the art therapist individually, then they can help you open your blocks easily. So if you have any queries related to this, we welcome you all to ask your queries. Don't hesitate for any kind of queries. This is definitely a very new technique which is being used now, but it is a very strong and very impactful. So I welcome you all to join all our social media channels. We keep on posting lot of things there for your reference. आप YouTube को सब्सक्राइब करिए, या हम स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ एक्सरसाइजेस गाइड करेंगे. You can experience. We have a community called Heart Therapy, जिसमें हम लाइव जाते हैं every Wednesday, and I take up the guided sessions for everybody. So please feel welcome and connect with us in any ways you feel comfortable. The idea is, I want to give you something which I have felt in my life, and I want to share it with everybody, that it is a very simple technique. If you accept in your lifestyle, it will take you towards the holistic well-being in no time. Thank you so much for your time, for listening to me, and I hope to see you soon somewhere in any of the channels with your questions, with the live sessions. Take care.